सो ये मेरा पहला वीडियो है जनरल मेडिसिन पे। स्टार्ट करेंगे मेरी फेवरेट सिस्टम से, नेफ्रोलॉजी, एक्यूट किडनी इंजरी। क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियसली हेल्दी 28-year-old मैन फ्रॉम बैंकॉक presents with a 20-day history of fever, myalgia, cough, nausea, vomiting, diarrhea, epigastric pain, decreasing urine volume, and lower limb edema. On physical examination, he was pale with a BP of 100/76. Lab blood analysis at time of hospital admission showed increased serum creatinine, potassium, creatine phosphokinase, uric acid, phosphorus, aspartate, and alanine aminotransferase, and decreased serum sodium, calcium, and bicarbonate. His blood count was normal except for a mild leukocytosis. Urine analysis disclosed 3+ proteinuria, RBC, leukocyte cast, and urine specific gravity of 1.030. Renal ultrasound disclosed normal sized kidneys. The differential diagnosis for this patient must include which of the following? Okay, so the trick is, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू डिसाइड कि अप्रोच कौन से सिम्टम से करना है और कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन से अप्रोच करना है। सो इस क्वेश्चन में हम अप्रोच करेंगे फ्रॉम इंक्रीज्ड सीरम क्रिएटिनाइन एंड लोअर लिम्ब एडिमा विथ डिक्रीजिंग यूरिन वॉल्यूम से। दिस सजेस्ट किडनी इन्वॉल्वमेंट। इट कैन बी AKI और एक्यूट और क्रोनिक किडनी इंजरी, क्योंकि रीनल अल्ट्रासाउंड discloses normal size kidneys, it is AKI. So the patient is having diarrhea since 20 days. अगर डायरिया है तो इंट्रावास्कुलर ब्लड वॉल्यूम घटेगा। अगर इंट्रावास्कुलर ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर घटेगा, क्योंकि वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. If mean arterial blood pressure decreases below 80 mmHg, then azotemia begins. Approach to azotemia includes doing renal ultrasound and urine analysis. क्योंकि ये पेशेंट को हाई सीरम क्रिएटिनाइन एंड ओलिगोरिया है विद पैडल एडिमा दैट सजेस्ट किडनी फेलियर. Since on USG renal size is bilaterally normal, this is not CKD, it's AKI. अब AKI can be pre-renal, that is hypovolemic AKI, intrarenal, that is AIN, glomerulonephritis, vasculitis, and acute tubular injury, and it can be post-renal. क्योंकि पेशेंट को किसी भी तरह का फ्लैंक पेन नहीं है और रीनल अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, दिस प्रोबेबली रूल्स आउट एनाटॉमिक कॉजेज ऑफ पोस्ट रीनल फेलियर लाइक स्टोन, RCC, and all that. In order to differentiate between pre-renal and intra-renal AKI, there are several investigations that are useful, और ये सब टेबल में दिया हुआ है. सो दिस इज अ टेबल. अब सारे पैरामीटर्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस फोकस जो भी वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टिगेशंस में. दिस सो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन 1.030. So here it is, urine specific gravity. If it is more than 1.018, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, that is 1.030, and it will be pre-renal acute kidney injury. Or if it is equal to 1.010, it will be acute tubular necrosis. Okay, so हमारे केस में the kidney injury is, acute kidney injury is pre-renal, और diarrhea causes pre-renal kidney injury due to an intravascular blood volume decrease. Since specific gravity of urine is 1.030, this suggests pre-renal AKI. Diarrhea causes a pre-renal AKI, but if prolonged can lead to ATI. ठीक है. The urine sediment shows leukocyte cast. So the following table gives information on types of cast and diseases. So here it is. अब सारे पैरामीटर्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे क्वेश्चन में जितना दिया है उतना हमको देखना है. ल्यूकोसाइट कास्ट, ठीक है, कास्ट, ल्यूकोसाइट कास्ट. 3 डिफरेंशियल्स बनते हैं इसके. एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस विच इज़ द मेन डिफरेंशियल, देन एक्यूट पैरानेफ्राइटिस, एंड समटाइम्स एक्टिव प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. और एक्यूट पैरानेफ्राइटिस हमारे क्वेश्चन में डिफरेंशियल नहीं हो सकता, क्योंकि रीनल अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है. व्हाट रिमेन्स इज एक्यूट GN और AIN. Hence
this indicates a pre-renal AKI with a intra-renal component. Okay, हमारे पेशेंट में प्री रीनल फेलियर है, जैसे हमने इस टेबल में देखा. ओके, ड्यू टू डायरिया, और क्योंकि there are leukocyte cast in the urine that indicates acute GN or AIN, which is a intrarenal component. Or since there is proteinuria as well with hematuria, active GN workup has to be done, and the following tests have to be ordered: ANCA, anti-GBM antibodies, anti-streptolysin O, anti-DNase, and cryoglobulins. So this is the table. This is the causes of acute kidney injury: glomerulonephritis or vasculitis. Some suggestive clinical features: they are compatible clinical history is recent infection, sinusitis, lung hemorrhage, rash, skin ulcers, arthralgia, hypertension, edema. And typical urine analysis results, it is RBCs जो हमारे केस में है, then white blood cells and proteinuria. So the confirmatory test will be ANCA, anti-GBM antibodies, anti-streptolysin O antibodies, anti-DNase, and cryoglobulin, and renal biopsy. Okay, so ANCA vasculitis के लिए होता है, anti-DNase is basically for SLE. So option A of our question is considered. ऑप्शन ए क्या है देख लेते हैं. ल्यूपस एंड सिस्टमिक वास्कुलाइटिस. ठीक है, तो ऑप्शन ए कंसिडरेशन में आ जाएगा. और since leukocyte casts are mainly seen in AIN, causes of AIN have to be undertaken. So drugs causing AIN are lithium, PPI, NSAID, sulfur drugs like trimethoprim, rifampin, but patient has no drug use history, so drugs consider नहीं करेंगे. ऑटोइम्यून कॉजेज हो सकता है लाइक एसिली, जोगरन, सार्कॉइड. ओके, एसिली हमने कंसिडरेशन में ले लिया. इन्फेक्शियस डिसीज़ की बेसिकली अगर हम बात करें तो टीबी, माइकोप्लाज्मा, लेजोनेला, लाइम्स डिसीज़, लेप्टोस्पायरा. और क्लिनिकल पिक्चर बेसिकली डायरिया है फीवर के साथ. सो टीबी, माइकोप्लाज्मा, लेजोनेला, लाइम्स डिसीज़ रूल आउट हो जाएगा. सो जो बच्चा वो है लेप्टोस्पायरा. ठीक है, आगे देखते हैं. यहाँ पे देखते हैं. दिस इज़ द आर्टिकल बाय मेडविन पब्लिशर्स. सो व्हाट इज़ गिवन हियर इज़ tubulointerstitial nephritis, interstitial fibrosis, and tubular atrophy are histologic findings of leptospirosis renal disease. Okay, since there is elevated creatine phosphokinase, this indicates muscle injury. There is elevated phosphorus and decreased calcium and elevated uric acid. This is basically suggestive of rhabdomyolysis. Okay, so what is given here is the same. Rapid increase in serum urea, creatinine, as well as jaundice are symptoms of acute kidney injury. Hyperbilirubinemia is associated with a severe form of kidney injury, one that is often accompanied by oliguria and anuria in the affected patient. Previous research has linked leptospira to non-oliguric AKI and hypokalemia. According to another study conducted by Viriaco Sol, leptospiral AKI associated with hemorrhagic diathesis was observed in 80% of the 58 patients. Liver failure 70%, respiratory failure, circulatory failure, pancreatitis, and rhabdomyolysis जो हमारे केस में है. Okay, so yes, this is since there is elevated ALT and AST, this suggests liver involvement, and liver involvement along with kidney involvement in the case of leptospira is basically what is known as Wales disease. Since there is hematuria with fever, dengue can be considered. Okay, so finally the option D is the answer. देख लेते हैं. ल्यूपस हमने देख लिया, लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, डेंगू. सो ठीक है, ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर. थैंक यू for watching this question.